नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास एडवोकेट है। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ ये सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट सेक्शन 27 क्या कहता है कि वॉट एवर इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम ए पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ पुलिस कस्टडी एज एक्यूज and it will be deemed as recovered under section 27 of evidence act, admissibility of that article recovered. तो सेक्शन क्या है? स्पेशली व्हेन ए पर्सन इज arrested by the police officer with regard to a crime and certain discovery has to be made through his confession, the relevant line or sentence which leads to discovery is admissible as per section 27 of Indian Evidence Act. तो कई बार ऐसा है कि लोग किसी क्रिमिनल केस में इंक्लूड होके या तो करके गलती से उनके पास से वेपन हैज़ टू बी सीज्ड ड्यूरिंग विच इज़ यूज्ड एज ए ऑफेंसिव क्राइम में यूज़ किया हुआ वेपन रहने दीजिए, आर्टिकल्स रहने दीजिए, कुछ भी हो, अगर एक्यूज के कन्फेशन पे रिकॉर्ड करना है या रिकवर करना है बाय द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अबाउट ए पर्टिकुलर केस, तो सेक्शन 27 विल कम इन टू पिक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. 27 of Indian Evidence Act says whatever is recovered during course of that inquiry from an accused who is in his custody, police custody, that recovery of a crime of weapon or articles which is used in the crime, that particular line or sentence of that confession is admissible. तो अगर कोई accused अपना confession दे रहा है, पूरा confession कभी भी admissible नहीं रहता of the accused, the part which leads to recovery. कन्फेशन में अगर वो कह रहा है कि मैं ऐसा फलाना आदमी को मारा करा या वॉट एवर इट इज़ देयर इन द कन्फेशन, तो आप अगर मैं वो जो वेपन यूज़ करा मैं आप मेरे साथ आए तो मैं दिखाऊंगा बोल के अगर ऐसा कुछ आया, या तो मैं जिस वेपन से वो क्राइम करा वो वेपन आपको दिखाऊंगा बोल के ले जाके, अगर दैट वेपन इज़ रिकवर्ड बाय द पुलिस इन प्रेजेंस ऑफ punch witness or someone, that particular sentence is admissible in Indian Evidence Act during course of trial or before the judiciary. जब ट्रायल चल रहा हो कोर्ट में, that particular line is admissible which leads to recovery of that weapon used for crime. और बाकी जो भी statement in confession, it is not admissible as per Indian Evidence Act. सेक्शन 27 कहता है इसके बारे में. तो सेक्शन 27 क्या कहता है? देयर मस्ट बी डिस्कवरी ऑफ ए फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट इन पर्सन्स ऑफ एन इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ए पर्सन पुलिस कस्टडी. तो वो आदमी कंपलसरी पुलिस कस्टडी में रहना ज़रूरी है जो कि जिसके कन्फेशन पे ये रिकवरी हो. और दूसरा, द डिस्कवरी ऑफ सच फैक्ट मस्ट बी डिपोज्ड. तो डिपोज्ड यानी ही शुड हैव स्पोकन बिफोर द पुलिस, बिफोर द पंच विटनेसेस, stating that जो भी कन्फेस कर रहा हूँ, तो दैट पार्ट लीडिंग टू दैट पर्टिकुलर वेपन, और मैं ले आके दिखाऊंगा या ऐसा कुछ भी करके ले जाके, इफ़ दैट पर्टिकुलर वेपन इज़ रिकवर्ड दैट पार्ट इज़ एडमिसिबल एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट. एंड थर्ड क्या कहता है? ये देयर मस्ट बी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट इन पर्सन्स ऑफ एन इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ए पर्सन पुलिस कस्टडी. बी द डिस्कवरी ऑफ सच फैक्ट मस्ट बी डिपोज्ड. And C, at the time of giving of the information, the accused must be in the police custody. Then the effect is that so much of the information as relates distinctly to the fact thereby discovered is admissible as per Indian Evidence Act, section 27. तो वो छोड़ के पूरा कन्फेशन कभी भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है. और एक्यूज कन्फेशन ऑलवेज बीन ए क्वेश्चन कि एक्यूज जो भी कन्फेस करता है पुलिस वालों के सामने वो कभी भी एडमिसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ हिट बाई 162 CRPC. तो the part leading to recovery before confession, in confession, that only part is admissible as per law. और कुछ भी इसमें admissible नहीं है. तो section assumes that there should be a statement first and it would be followed by discovery. When the evidence disclosed that there was first recovery followed by the statement, such statement is not admissible under the section. State of Orissa versus Bairagi Charan. When the statement is not proved in evidence, section 27 is not attracted. When the statement is not proved in section 27 is not attracted. Sambhu Bora versus State of Assam. तो ये है, when without a statement a weapon is recovered from the beneath court and made over to police,
factum of recovery is barred under section 27 and cannot be relied upon as admissible. A. Bahadul versus State of Orissa, AIR 1979, Supreme Court 1262. This is two judgments which says a statement proved in evidence is not attracted. So it is not the law that the declarant should actually lead to the place from where the recovery is effected, nor he should personally take out some incriminating object. All that is necessary is that there should be an information about the fact and recovery pursuant to thereto. तो इस जजमेंट क्या कहता है? स्टेट वर्सेस राम अवतार 1980 क्रिमिनल लॉ जर्नल NOC 100 दिल्ली. ये क्या कहता है कि where recovery is affected nor he should personally take out some incriminating object, all that is necessary that there should be an information about the fact and recovery thereof. एक फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे एक्यूज और उसके बाद अगर रिकवरी हो किसी वेपन का और आर्टिकल्स का विच इज़ यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, दैट पर्टिकुलर लाइन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ एडमिसेबल एज पर सेक्शन 27. अगर कोई चीज़ कन्फेस करने से पहले या स्टेटमेंट देने से पहले रिकवर हो, दैट इज़ नॉट एडमिसेबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. एंड ये थोड़े जजमेंट्स है. और ये क्या कहते हैं? Accused when leads the police to a place and points out to the place where from the incriminated article is discovered. The hypotheses that are possible are that the accused saw somebody placing the incriminated article, a dead body, and that somebody told him the dead body was lying there. Third, that the accused himself had placed the dead body there. In considering the reasonability of any of the hypotheses, the court must have regard to the situation of place where the article is placed or buried. ओसन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1978 80 पंजाब LR 106. ये एक जजमेंट है इस ताल्लुक से. फैक्ट डिस्कवर्ड ऑन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इंटरफेरेंस. तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. द वर्ड डिस्टिंक्टली मीन्स डायरेक्टली, इंड्यूबिटेबली, स्ट्रिक्टली, अनमिस्टेकेबली. ये थोड़े वर्ड्स है विच आर बीन यूज्ड इन confession and recording of confession by the police department in any criminal cases. तो एक और वो जजमेंट क्या कहता है? ओनली द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एडमिसेबल विच लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ ए सर्टेन फैक्ट इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड एंड नो मोर. द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपेंड्स entirely on the exact nature of the fact discovered in pursuance of such information. This is very much important. This is one of the judgments. State of बिहार वर्सेस प्रभु सहाज खारिया 1969 BLR J 578 पेज नंबर. और एक और जजमेंट है विच रिगार्ड टू अगर ओपन प्लेस में कहीं भी अगर सम रिकवरी इज मेड, तो व्हाट इज़ द सिचुएशन इन क्रिमिनल केसेस. कई बार ऐसा होता है कि कोई भी आर्टिकल या वेपन विच इज़ यूज्ड इट विल बी थ्रोन ऑन द पब्लिक प्लेस और something was been left in the public place while committing offense. What is the fate of that recovery, whether it is admissible or not? यहाँ judgment recovery from uncovered or open place. What is not covered cannot be discovered. This is judgment 1982 Criminal Law Journal 2056 Sadashiv versus State of Maharashtra. So ये क्या कहता है? ओपन प्लेस जो है, फील्ड्स एंड दीजिए प्लेस, अगर रिकवरी फ्रॉम ओपन फील्ड एक्सेसिबल टू ऑल, ओपन प्लेस है, पब्लिक मूवमेंट से रेगुलर रहता है और इट इज़ ए प्लेस वेयर पीपल विल कंटिन्यूसली मूव और पब्लिक अपीयरेंस, घूमना करना चलना ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेस में अगर कोई भी रिकवरी है तो वो एडमिसेबल नहीं रहता ज़्यादातर. रिकवरी फ्रॉम ए ओपन प्लेस 3 weeks आफ्टर द अकरेंस इट इज़ वैल्यूलेस. और कई बार ऐसा रहता है कि दूसरे के पोजीशन में आर्टिकल्स रहता है और पुलिस वाले कन्फेशन ऑफ द एक्यूज के दौरान जाके वहाँ पर रिकवर करते हैं. तो वैसे हालत में क्या है? व्हाट इज़ द ऑप्शन और द लॉ सेज अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू. तो ये क्या कहता है जजमेंट? द फैक्ट दैट द आर्टिकल इज कंसील्ड एट एन ओपन प्लेस इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्कार्ड द एविडेंस ऑफ डिस्कवरी. अगर ओपन प्लेस में गलती से अगर कोई चीज़ छुपा के रख दिया जाए, दैट पर्टिकुलर रिकवरी
sentence which leads to evidence can be taken into account. मगर अगर openly पड़ा हुआ है and it was thrown in open place, leading that article through confession and recovery, that is not a piece of evidence or recovery that could not be proved. तो the section of law or rule of law कहता है whatever is recovered it should be at a particular hidden place or a place where public access is not at all, means regularly used place or some hidden unused place में भी अगर आर्टिकल्स फेंक दिया जाए कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हुए या कोई क्राइम वेपन रेंज लाठियाँ रेंज वॉट एवर आर्टिकल्स फॉर बीन यूज इन द कमीशन ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, अगर वो पब्लिक प्लेस में फेंक दिया जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, अगर पब्लिक चहल पहल ज़्यादा है, पब्लिक का यूसेज ज़्यादा हुआ, ज़्यादा लोग चलते आते जाते रहते, वैसे वो रिकवरी ओपन रिकवरी को एडमिसिबिलिटी नहीं है। अगर वही कुछ कवर में लगा के या कुछ भी कपड़ों में छुपा के करके कहीं भी ओपन प्लेस में भी फेंक दिया जाए तो दैट रिकवरी पार्ट इज एडमिसेबल एज पर लॉ एंड दैट पर्टिकुलर सेंटेंस which leads to recovery is admissible as per section 27 of Indian Evidence Act. So with regard to the recovery part in any criminal activity, any offense where a weapon is used or a article is used for commission of any criminal activity, these are the judgments which are very much important, that it should be a place where ज़्यादातर पब्लिक ना चले और छुपा के आर्टिकल रखा गया हो, that recovery is very much admissible, that particular line in the confession. और कन्फेशन के बाद ही रिकवरी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कई बार क्या है, कन्फेशन से पहले रिकवरी होता है, बाद में कन्फेशन होता है, एक तो उसका कन्फेशन करके वो रिकवरी बताते हैं। और एक और चीज़ है केसों में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन क्रिमिनल ट्रायल, जो कि ज़्यादातर एडवोकेट्स को मालूम है कि अगर कोई भी ऐसा वेपन यूज़ किया गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल क्राइम, और आप ट्रायल में क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि दोज थिंग्स आर ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक लाठी से मार दिया जाए, मारे करे, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुआ तो ये लाठियाँ ईजिली एक्सेसिबल टू एनीवन, कहीं भी मिल जा सकते हैं। और कई चीज़ें हैं जो कि यूज़ करते हैं वो ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। तो अपन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आईओ को कि जो भी आप आर्टिकल जो आप रिकवर करें उसके पोजेशन से, या जो एमओस है उसको आर्टिकल जो रिकवर होता है क्रिमिनल केसेस में उसको एमओस के नीचे मार्क किया जाता है, मटेरियल ऑब्जेक्ट के नीचे। अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट के नीचे मार्क किए सो आर्टिकल को आप आईओ को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंड कन्फेशन करे, जो पंच विटनेस है उनके सामने आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो आर्टिकल आप सीज कर रहे बोल के बता रहे हैं इस केस में, ये आर्टिकल ईजिली मार्केट में अवेलेबल है ना बोल के आप पूछ सकते हैं। और उनका कंपलसरी ही विल से दैट दीज थिंग्स आर वेरी मच अवेलेबल इन द मार्केट, तो वो एडमिसिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल भी वेरी मच easy for you to deny those articles, and you can give a suggestion saying that these articles are being planted by you for the case purpose, and when these articles are easily accessible in the market, nothing was being recovered by on the confession of the accused, आप केस में एक मटेरियल ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, इसलिए पब्लिक में मिलने वाले आर्टिकल को आप ला के लगाए, ये रिकवर नहीं हो। ऐसे क्वेश्चंस आप क्रॉस एग्जामिनेशन में आईओ से पूछ सकते हैं, इवन पंच विटनेस और पंचास टू द रिकवरी पार्ट। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करें, इट इज़ आर्टिकल सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, रिकवरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर्टेनिंग टू एनी आर्टिकल विच इज़ यूज्ड इन द क्राइम। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास एडवोकेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।